morning students. Today we are going to discuss the third reaction of metals, that is the reaction of metals with acids. In the previous videos we had discussed the reactions of metals with air and water, and there we had seen some of the metals they react vigorously and some of the metals they react with a medium pace and some of the metals they react very slow. Okay, so let's see in this reaction, when they react with the acids, how do they react? Are they reacting with the same pace or again they are showing the different pace? Let's see this. So first, when they react with the acids, metals, when they react with the acids, they forms the metal salts. As in all the reactions, first I had written the general reaction कि वहाँ पे अगर वो react करेंगे तो what will be the general products, and then specifically we will take the metals. So here first they will form the metal salts and hydrogen gas. Okay, so any metal when combined with any acid, it will form its corresponding salt along with hydrogen gas and energy. Energy is formed during the reaction, that means they are exothermic reaction. So in these type of reactions, the energy will be produced, so the temperature will rise, and they are considered as exothermic reactions. So here we are taking some metals. Take few metals like aluminium, magnesium. Students, here we are avoiding sodium and potassium because they are highly reactive metals. So we are just avoiding these two metals. Aluminium, magnesium, iron, zinc. You can also take copper along with dilute hydrochloric acid. So we will take 4 or 5 test tubes. We will write the copper also. We will take copper also. Okay, it will be fine. We can compare that. So iron, zinc, copper and dilute hydrochloric acid. Now one by one we will add, not one by one, we will take 4 or 5 test tubes and then we will add HCl to all the 5 test tubes, and in all the 5 test tubes we will add these different metals. Suppose पहले जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप ऐड क्या कर दोगे? एल्यूमिनियम. सेकंड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप ऐड कर दोगे मैग्नीशियम. थर्ड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑलरेडी प्रेजेंट, you will add iron. So we are adding different metals in different test tubes containing dilute hydrochloric acids. Okay, now we have to observe two things. First, the bubble formation, in which case the bubbles form vigorously, in which case the bubbles forms with a low speed. Okay, and second thing which we have to observe is that in all the test tubes we are going to put the thermometers, and we will notice in which case the temperature rises very fast and very quickly. Okay, so we will observe these two points. Now first I will write down the reactions with the hydrochloric acid. First we will take aluminium. Aluminium plus HCl, we are taking dilute and it will form the corresponding salt. So aluminium and Cl, the salt form will be AlCl3. You all know the valencies of the elements. Aluminium plus 3 charge it shows, and chloride it is having -1. So the formula will be AlCl3. Don't write AlCl, students, don't make this mistake. And along with this, hydrogen gas will be formed. The formula of hydrogen gas is H2, na ki H. Okay, but so here we have written this one. So you have to balance the reaction. 3HCl अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये Cl तो बैलेंस हो जाएगा, बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा. So we will write down 6 over here. If you are writing 6 HCl, so आप यहाँ पे बैलेंस कर दो, twice AlCl3 and it will be 3H2. So it is balanced. 3 into 2 6, 2 into 3 6. Aluminium 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं. So first write the correct reactants and products and then balance it. Okay, अब हम लिख देते हैं for magnesium. Magnesium plus HCl, डाइल्यूट ही लेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड along with hydrogen gas, twice Cl and twice H, so we will take twice HCl. Students take care, कई students magnesium को लिख देते हैं Mg. This is not the correct way of writing the magnesium. This is the milligram, not the magnesium. So the first letter should be capital. Then we will write the reaction with iron, Fe plus HCl dilute. It will form
अब अगेन क्वेश्चन आता है कि मैम Fe it is showing the variable valency, sometimes it shows +2 +3. So for elements which are showing the variable valencies, students always go for the +2. That is the common oxidation state. So Fe के साथ जब भी HCl react करेगा तो it will form FeCl2. Don't write FeCl3. So the common one, if it is mentioned Fe +3, then write. Otherwise write FeCl2. Along with hydrogen gas, we will write 2 over here. Then the next one is zinc. Zn plus HCl. Dilute है हमारा. It is going to form a salt, zinc chloride, along with hydrogen gas. Here 2 will be written to balance the reaction. The next one is copper. Copper plus HCl. Dilute ही लेंगे. But here no reaction will takes place. Okay, now along with this there will be energy produced, same. So E it is not any element, but it is the energy. Okay, it is understood, students, make it right. It is energy because I have to use the board, so I am not writing here. It is the energy produced along with this. Now we have to observe that in all the 5 cases, in which of the following the bubbles form more vigorously. So we will notice that in case of magnesium, the bubbles formed vigorously. सबसे फास्ट जो बबल्स बन रहे थे वो मैग्नीशियम में बन रहे थे, देन हमारे बन रहे थे एल्युमिनियम में, देन हमारे बन रहे थे जिंक में, और देन इट इज कमिंग इन Fe, और उसके बाद कॉपर में तो बबल्स फॉर्म ही नहीं होते हैं. दैट मीन्स कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स. So we can say magnesium, it is most reactive among all the 5 elements. Okay, this you can do on the basis of the reactivity series also. Students, इसमें क्या किया है, in all these 4 reactions which we are going to learn one by one, after that they had concluded that on the basis of all these experiments they had placed different elements in the reactivity series and they had made a series और उसको नाम दिया reactivity series. बट अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज हम माइंड में पहले से याद रख लें कि हाँ फर्स्ट हमारा जो है पोटेशियम है, हाईली रिएक्टिव है, और जो हमारा हाइड्रोजन है उसके नीचे कॉपर है, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव, तो इजी हो जाता है. व्हाट वाज द रिएक्टिविटी सीरीज, डू यू रिमेंबर? Anyone of you remember, students? Yes, it is correct. K na ka magal. I am just writing here again, once again. K na ka mag al. K na ka mag al FeSnPb. K na ka mag al FeSnPb. बेटा Fe से पहले हम जिंक भी ले लेते हैं ना. K na ka mag al जिंक FeSnPb. हाइड्रोजन कॉपर Hg Au Hg Ag Au, और लास्ट में हमारा रहता है प्लेटिनम. सो K ना का मग अल, देखो अब यहाँ पे मैग्नीशियम है हमारा, फिर हमारा एल्यूमिनियम है, फिर हमारा यहाँ पे क्या है, जिंक है, और फिर हमारा आयरन है, और कॉपर जो है यहाँ पे है. ठीक है. सो in the reactivity series also we can see the upper ones which are the upper ones they are more reactive as compared to the lower one. तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा आयरन के कंपैरिजन में. एंड स्टूडेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नीचे आएंगे दैट मीन्स दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. सो हियर दिस हाइड्रोजन will be not be displaced. देखो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, who is more reactive? एल्यूमिनियम. देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे आ रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है. सो दिस एल्यूमिनियम इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इट इजीली डिस्प्लेस, एंड एल्यूमिनियम के साथ क्लोराइड के साथ वो सॉल्ट बना देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर देता है. इन ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस these elements, these metals, they are more reactive than hydrogen. They are coming on the upper side, so they easily displace hydrogen and form hydrogen gas. But if you will see the case of copper, देखो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, कॉपर is less reactive than hydrogen, so it is not able to displace this hydrogen and reaction will not takes place. अगर कॉपर की जगह मैं यहाँ पे Ag लिख देती हूँ या Au लिख देती हूँ, then also the same the reaction will not occur. Is it clear? So we can say in which of these case the temperature will be the maximum or it will be the most exothermic, it will be magnesium.
magnesium. So we can say the conclusion out of all these elements, magnesium it is the most reactive and copper it is the least reactive. This was a general case. Now if you take HNO3, अगर आप HNO3 लेते हो स्टूडेंट्स, नाइट्रिक एसिड अगर हम लेते हैं इंस्टेड ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, तो अब HNO3 के केस में क्या होता है, हमको ये लगेगा कि मैम एसिड ही तो है, एसिड दैट मींस H को रिप्लेस करके नाइट्रेट के सॉल्ट्स बना देगा और साथ में क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस. बट नो स्टूडेंट्स, HNO3 जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैड डिस्कस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दे ऑक्सीडाइजेस अदर्स बट इटसेल्फ अंडरगोस रिडक्शन. ठीक है, तो अब ये क्या करता है HNO3, यहाँ पे हमारी जो भी हाइड्रोजन गैस बन रही थी, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है H2O के अंदर. It oxidizes the hydrogen gas formed into water and itself undergoes reduction. अगर खुद का रिडक्शन हो जाता है तो it forms the oxides of nitrogen. या तो वो बना देता है N2O, या फिर बना देता है NO, या फिर बना देता है NO2. So itself it is undergoing reduction in the oxides of nitrogen. इसको हम बोलते हैं nitrous oxide. This is nitrous oxide. This is nitric oxide and this is nitrogen dioxide. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, वैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2. ओके, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो HNO3 अगर आपने एसिड ले लिया, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद दिस HNO3. So what you will write that it is a strong oxidizing agent. It oxidizes hydrogen into water and itself undergoes reduced to form the oxides of nitrogen. It can be nitrous oxide, nitric oxide or nitrogen dioxide. Okay. Now one thing more, it is written in our NCERT book that the magnesium and manganese reacts with dilute HNO3. They reacts with very dilute. अगर आपको मैग्नीशियम एंड मैग्नीज दे दिया है, ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज और हमारा जो HNO3 है वो बहुत डाइल्यूट है, तो दे कैन रिएक्ट टू फॉर्म द डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज द सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस. ओके, तो यहाँ पे अगर यहाँ वेरी डाइल्यूट दे दिया आपको तो आप लिख सकते हो, उसको नोट कर लेना, वेरी डाइल्यूट HNO3, so they can produce the hydrogen gas plus salt. Okay, so this was all about HNO3. Now students, if I ask you a question, name any two metals which combines with acids to give the hydrogen gas, and any two metals which combines with acids and they do not produce any hydrogen gas. Means दो ऐसे मेटल which reacts with the acids to give hydrogen gas और दो ऐसे metals which reacts with acids but they do not give any hydrogen gas. कहने का ये मतलब है कि they do not react with this and no hydrogen gas is liberated. So you can easily give the answer on the basis of this reactivity series. हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उनमें से कोई से भी दो मेटल दे दो, दे ऑलवेज गिव द हाइड्रोजन गैस. और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल्स हैं, दे विल नॉट गिव द हाइड्रोजन गैस. दैट मींस दे विल नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स. Is it clear? So these are the two concepts. First, what happens when acids combine with metals, and second, अगर HNO3 का केस लेते हैं तो how we will explain. Now the third point which we have to study here, it is the aqua regia. बड़ा interesting है students, aqua regia. Okay, अभी हम देख रहे हैं कि ये जो गोल्ड है, प्लेटिनम है, इट इज कमिंग बिलो हाइड्रोजन. सो अगर आप गोल्ड को HCl में डालते हो या गोल्ड को आप H2SO4 में डालते हो या प्लेटिनम जो मेटल है उसको HCl में डालते हो या H2SO4 में डालते हो, तो देयर विल बी नो रिएक्शन. बट इफ यू टेक द एक्वा रीजिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल वाटर. इसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर. लैटिन के अंदर बोलते हैं इसको, लैटिन लैंग्वेज के अंदर.
this is a highly fuming and corrosive liquid, highly fuming and corrosive liquid. अब होता क्या है पहले ये देख लें. This is actually HCl to HNO3 और इनका रेशियो हम क्या लेते हैं 3:1. 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3. एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है दोनों ही हमारे कौन से एसिड हैं कॉन्सेंट्रेटेड, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एक्वा रीजिया. कॉन्सेंट्रेटेड HCl का 3 पार्ट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का 1 पार्ट अगर हम टेस्ट ट्यूब में मिक्स करते हैं देन वी गेट द एक्वा रीजिया. व्हेन द मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम they combines with aqua regia, they do react and they liberate some hydrogen gas. So I will tell you the reaction, though it is not given in our book, but I'll tell you what happens when aqua regia it is mixed with the gold. First हम gold का लेते हैं. देखो HCl plus HNO3, first आता है nitrosyl chloride NOCl along with nascent chlorine और इसके साथ में बनाता है हमारा H2O. ठीक है, इसके साथ में हमारा बना रहा है H2O. इसको अपन बैलेंस कर देते हैं. दिस इज नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसको नोट कर लो, नाइट्रोसिल क्लोराइड. एंड दिस इज नेसेंट क्लोरीन और नेसेंट क्लोरीन मींस इट इज हाईली रिएक्टिव. स्टूडेंट्स हमें पता है जो क्लोरीन होता है इसका एटॉमिसिटी होता है 2. This Cl atom it is not stable, it is highly stable, highly reactive. So अभी nascent chlorine आपकी HCl और HNO3 का मिक्सचर ये है, that means उसके अंदर nascent chlorine present है. अब suppose मैंने उसमें gold ऐड कर दिया Au. When it combines with this nascent chlorine, it forms gold chloride AuCl3. इसको आप नेम दे सकते हो either gold 3 chloride और आप इसको नाम दे सकते हो ऑरिक क्लोराइड. ओके, सो गोल्ड जब नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स क्लोराइड ऑफ गोल्ड, दैट इज गोल्ड 3 क्लोराइड. दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग अ फॉर्मूला स्टूडेंट्स. हियर दिस गोल्ड it is showing the variable valency, so we had mentioned the oxidation state by writing it in the Roman after the name gold 3 chloride और auric chloride. ठीक है, that means gold ने भी react कर लिया and it has formed hydrogen gas. Okay, अब इसी तरह से हम platinum की reaction लिख देते हैं. Platinum when combines with this it forms PtCl4. Okay, that means platinum 4 chloride. ओके, along with कौन सी गैस बन जाएगी हाइड्रोजन गैस. सो यहाँ पे हमने देखा कि गोल्ड और प्लेटिनम दे जनरली डू नॉट कंबाइंस विद द एसिड्स, बट आपने एक्वा रीजिया लिया है, रॉयल वाटर लिया है, दैट इज द हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड. देन गोल्ड और प्लेटिनम ये दोनों भी इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं. ठीक है, एंड हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू. नाउ वन ऑफ द क्वेश्चन इट इज गिवन इन द बैक एक्सरसाइज स्टूडेंट्स. वन ऑफ द पर्सन ही यूज्ड टू से दैट आई एम अ goldsmith and he used to go door to door and generally the ladies they don't have the knowledge about this aqua regia. So what he used to ask them, you just give me an old and the old gold there's ornaments, I will bring back the glitter or shining on that. Okay, so the ladies think okay fine, my gold ornament it is not glittering, so I'll get its glitter back, and they used to give that ornaments to that person. And now he is very cunning, he dips those ornaments in one liquid. Okay, and when he takes out that ornament it shines, it glitters, but its weight gets reduced and ladies gets happy कि okay my ornament it is now shining, it is having a shining luster, it is now glittering, they gets happy. But actually that person had cheated that lady. How he is cheated? Because he has taken the aqua regia में उसने गोल्ड को डाला. ठीक है, गोल्ड ने उस पर रिएक्ट किया एंड गोल्ड हैज कम आउट इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड इन दैट सॉल्यूशन. उस गोल्ड की क्वांटिटी थोड़ी सी उसमें एक्वा रीजिया में आ गई है. अब वो पर्सन क्या करेगा? ही विल रिकवर दैट गोल्ड फ्रॉम द एक्वा रीजिया एंड दैट लेडी शी विल सफर द लॉस, क्योंकि उसका जो गोल्ड का वेट है वो वहां पे रिड्यूस हो गया है.
हैं. So in this way also the persons do the misuse of the knowledge. Okay, so here students I have discussed with the reactions of metals with acids, and the next video we will discuss the reactions of metals with the metal salts. Okay, thank you, goodbye.